Are you a feminist? Yes, I am. In the way I live, in the way I think, in all of that. But I also take umbrage with certain people who've like usurped the term. And it's kind of like rock star. I have this t-shirt which says feminism, the radical notion that women are people. हेलो सोनम, वेलकम टू द मेल फेमिनिस्ट। घर में भाई होता है तो देयर इज अ क्लियर डिवाइड, जिस तरीके से लड़के को ट्रीट किया जाता है और लड़की को। ऐसा आपके घर में कभी होता हो, देखा आपने? हाँ बिल्कुल, मतलब भाई को घर से बाहर जाके खेलना अलाउड था। आई वॉज टोल्ड दैट यू वोंट गो आउटसाइड द हाउस एंड प्ले, लाइक यू विल प्ले टेरेस पे जाओ, तो वो बाहर जाके खेल सकता था। I was not allowed to go out. But the first time I went out clubbing, I had to take my mom along. That's how strict my dad was, and like strict in the sense he's not strict, he was protective. My parents were a little concerned in overall about safety, not because I was a girl alone. They were very particular about which kind of homes we had sleepovers in, and where for their reasons. Yeah. The greatest thing they did give me was saying, you're smart, you should be able to take care of yourself. My dad was always pretty forward with the two of us, always giving us all kind of azadi that we wanted. As the elder sister, क्या कभी आपने अपने ब्रदर को अवेयर करवाया कि भाई पीरियड्स ही होते हैं या ऐसा सब कुछ? ग्रोइंग अप तो नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरा इन्वायरमेंट ही ऐसा था कि हर चीज को लेके ना शर्म थी। मतलब मेरी माँ, जब मेरा फर्स्ट पीरियड हुआ, आई केम होम, मेरे स्कर्ट पे स्टेन लगा हुआ था। फॉर सम रीजन वो स्टेन ना थोड़ा ग्रीन सा था। तो पेन में हूँ, कुछ है नहीं मेरे पास, आई हैव नो पैड, नथिंग टू यूज, ब्लीडिंग, बट छुपाना है, कुछ ना कुछ करके छुपाना है। ठीक है, स्कूल से आ गई हूँ, स्कूल की स्कर्ट वॉशरूम में डाल दी है, वटेवर। मेरी मम्मी ने देखी, तो क्या हुआ, एंड उनको देखिए वो खुद इतनी शर्मीली हैं कि उनसे भी बात नहीं हो पा रही अपनी बच्ची से कि क्या हुआ, कुछ हुआ है तेरी स्कर्ट पे दाग। एंड मैं झूठ बोल रही हूँ, नहीं वो तो मैं घास में बैठ गई थी तो ऐसे हरा वो लग गया। अच्छा, कुछ हुआ तो बताना। शी इज ऑल्सो वेटिंग कि मैं बताऊं। ठीक है, एंड हमने ठीक है। फिर जब थोड़ा देर हो गई, जब नाउ आई नीड समथिंग टू यूज, फिर मैं गई, मम्मी वो हो गया है। तो शी जस्ट नीडेड दैट, सो देन शी गिव मी अ पैड, डिडंट रियली टीच मी एनीथिंग कैसे क्या, कुछ भी थोड़ा बहुत बताया कैसे लगाना है, बस खत्म। उसके बाद मोस्ट इंस्ट्रक्शन शी गेव मी वाज अबाउट कैसे पैड छुपाना है, कैसे पैड फेंकना है, कैसे भाई और पापा की नजर में ये कुछ आना नहीं चाहिए। तो मैं उसमें ज्यादा जीती रही। Us with female bodies, we fluctuate. Like some days I have abs, and then I get my periods और मेरी abs चली जाती हैं। फिर मेरा body अलग दिखती है, and I put on weight. I deal with like a lot of water retention. And I can't like sit and like expect my body to look the same. And that's the beauty of being a woman. There are women who have, comfortable periods, let's call it that, a comfortable monthly cycle. But there's a lot of us who don't. And trust me, we don't want to be jumping in white pants. No. We want to sit on the couch, have something warm and cry a little bit. That's really how painful it is. ये बताओ, आप दो बहनें हो ना? जी। हाँ, तो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होती थी? दिल्ली में वो हो ही जाता है, मुझे लगता है। आप रिस्ट्रिक्शन ना ही बनाओ, पर आपको you know that you have to be safe. I was in a metro, कॉलेज से छुट्टी हुई, ग्रीन पार्क से मेट्रो ली, ये राजीव चौक पे बदलना पड़ता था। मैं थी और 4-5 लड़के थे, and then they started teasing. And then they started touching. तो अब उसमें ना आप कितना भी गुस्सा कर लो ना, तो I was very like I felt very helpless. But मुझे पता था कि मैंने ज़्यादा बोला तो कुछ भी हो सकता है सिचुएशन में। To my surprise, no one in the metro helped. तो मैं ऐसी थी कि रोऊंगी नहीं, इनकी सबकी वाट लगा दूंगी मैं, और मैं लड़ भी रही थी। Then I got out at Rajiv Chowk. I started running and they started following me. They were all 6'1", 6'2", very tall, very like muscular men. Thank God बहुत भीड़ होती है राजीव चौक पे, मैं बच गई। I went to a washroom. I called my father up. I was like, please come pick me up. It was not a good day. एक लड़के को तो मैंने इतना मारा था कि मेरा हाथ सूज गया था, because I was that pissed. क्या किए थे भाई? He tried to grab my ass and then पकड़ लिया हाथ और खींच के बाहर निकाला मैंने उसको, और बहुत धोया। Delhi is like insane, यार, and worse over time. Truly not a city safe for women. Yeah. It's very important for the woman to come out there and say that this has happened to me, so that that guy, उसको उसका अंजाम मिलता है. He's punished. Otherwise, he'll go and he'll attack the next victim. Were you asking men out? Were you taking the first kadam types? I did propose to a boy. Really? Yes. Nice. Went down on my knees. Oh, really? Yeah, Oh, sang wow. a song.
कौन सा गाना था? Out of curiosity. एक्चुअली अंग्रेजी गाना था, ग्रीटिंग कार्ड वाला था. मुझे बड़ा अच्छा लगा था तो मैंने वो गाना रट लिया था. एंड इट वेंट लाइक, oh my pretty pretty boy, I love you like I never ever loved no one before you. Pretty pretty boy of mine, just tell me you love me too. No, not at that age. वो टाइम भी अलग था. हाँ, वो टाइम अलग था यार, जहाँ पे बचपन से सिखाया जाता है कि ओ यू शुड बी प्रिटी एंड शादी जल्दी होनी चाहिए. शादियों में आई यूज्ड टू गो एंड सी एज अ चाइल्ड, आई यूज्ड टू सिट ऑन द ब्राइड्स चेयर कि मेरी भी शादी होगी, यू नो. Oh, you were शादी obsessed? या बचपन में आई वाज टोटली शादी ऑब्सेस्ड. मतलब बचपन में जब मैं शादियों पे जाती थी विद माय पेरेंट्स, आई यूज्ड टू लुक एट द ग्रूम एंड फील शाय एंड ऑल. शादी के ठप्पे की जरूरत थी? Why is it such a big deal? I don't understand. क्योंकि मतलब ये तो हमारी कंडीशनिंग है कि ये करना एंड रिजल्ट इज शादी. बट क्यों? It does not guarantee you anything. If a person has to walk out of your life, वो शादी हो या नहीं हो वो तो जाएगा ही. Tomorrow, when I'm marrying somebody, it will not be for money, is what I know today. I've earned that. You know, you can be rest assured I'm not after your money. I'm not after the property of yours once we get divorced. That people are very scared of. You know, in families, everybody is like, prenups are a thing. Yeah, prenups and all of those things. I don't think I'm going to be that woman. कास्टिंग के दौरान आपके साथ कभी किसी डायरेक्टर या कास्टिंग वाले ने किसी बुरे सवाल रखे आप तक? बड़ी कमाल की भाषा होती है इनकी. ये जो लोग आपको इस तरह से इस तरफ खींचना चाहते हैं, वो दर्शाते ऐसा है कि यही तो तरीका है इंडस्ट्री में काम करने का. अच्छा. आप जानते नहीं हो, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस यही करके काम कर रही हैं. आप करोगे नहीं ना, आपका कुछ नहीं होगा. And he asked me like, are you a virgin? I said, no, I'm not a virgin. So he was like, Firi, it should not be a problem for you to then sleep and all. He was like, yeah, I mean, एक बार कर लिया तो then it should not be a big deal, na? Especially you're a foreigner, you like you girls sleep around like very this and that. And I felt so insulted. When I would go to meetings, बहुत सारे लोग ने जैसे हम बाय बोला तो सीधा ये किया है. So I started thinking maybe this is the way you have to. Great. So I just want to show these things to the women watching this or the girls watching this. Just bring your hand forward. What happens is this is done when you're in a handshake. So this is done. Yeah. And I find it disgusting to know that I know this. But ये हुआ आपके साथ, and this is an indication of wanting to sleep with the person, but in a very, very derogatory, demeaning, fuck all manner, which I hate. Yeah. मीडिया का जो बन रहा था वो लिखते हैं. रोड पे नाची ऐसे लोग भड़क उठे. ये कहाँ से ये हिंदी आर्टिकल्स ना, मेरे से क्रिंज मचता है. Let's open the Google. Let's type निया शर्मा. इतनी छोटी स्कर्ट पहन सड़कों पर उछल कर निया शर्मा ने की मस्ती. देख लड़कों के भी खड़े हो गए रोंगटे. हाँ, खड़े हो गए रोंगटे. Who writes these? I want to know the name of the person who's right. And ये हर दिन का है. और ये reputed है यार काफी. और मैं कहाँ नाची पता है? एक बार मेरा इंस्टाग्राम खोला. I was at Universal Studios dancing around. मैं सड़कों पे नंगी नाचती हूँ क्या? आपके फेस वैल्यू जजमेंट या हाइट वेट के बारे में कमेंट्री नहीं हुई? मेरे वेट के बारे में होती थी. लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट आई लॉस्ट बिकॉज थोड़ा सा आई वाज नॉट द आइडियल वेट. इवन नाउ, इवन टुडे आई गेट टू हियर दैट यू डोंट लुक लाइक अ हीरोइन or you are not that conventional heroine. I did get my nose fixed, and it was very obvious I got my nose fixed. My nose was broken and quite different before. And I did my first film with my old nose. Yeah. And then people are like, oh, she's just using the deviated septum excuse. No, I did have a deviated septum. It hurt. But if I could make it prettier, it's my face. Why wouldn't I? They put the song on the screen, which was to release, and they actually made a circle on my stomach in a conference room. On the big screen and said, see, look at how fat you are. Because of this, we're not being able to release the song. So this is the time they also put me on fat pills, okay, which apparently caused me suicidal thoughts and depression, which I wasn't aware of. शूट पे थी मैं अभी रिसेंटली, जयपुर में हम शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे इतना बड़ा सा पराठा था. तो वो जो रेस्टोरेंट वाले अंकल थे ना, वो मुझे ऐसे बोलने लगे, अरे इनको खिलाओ इनको तो जरूरत है. पहली बार लाइफ में ना, और सिर्फ मैं बहुत प्राउड थी उस दिन. मैंने बोला, अंकल ऐसे नहीं बोलते. Now that I have put on, there are a lot of comments that go like, अरे इसकी शक्ल फुटबॉल जैसे बन गई है. The world says whatever the hell they want to say. मैं बहुत मोटी चमड़ी हूँ. हम कंसेंट पे चर्चा करते हैं मेल फेमिनिस्ट पे. बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत ग्रे है. तो किस तरीके से महिलाएं ना बोलें कड़क वाला? Every girl, if you're feeling like someone is trying to hit on you in a way that's
not making you comfortable, but they're your close friend and you're scared that will they feel bad as a friend? Or will you lose the friendship? Will you lose the friendship? I'm saying you might lose the friendship, but don't just take it because you're scared of losing the friendship. I think there's been a big shift in terms of intimacy scenes. Like people I've noticed have really prepped you beforehand, have like asked for rehearsals, asked for a closed room so it's just the DOP and a couple of ADs and the director. So all of these things are starting to become standard, which is brilliant. Like I want to know, you know, like that I'm in a safe space when I'm kissing someone in front of a camera. बहुत बार हम लड़कियों को लगता है कि क्यों किसी को offend करे, तो you start in like a very no let's not, like hey, आपको राड़ा नहीं करना है, क्योंकि you don't want to create a scene. पर फिर मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि सामने वाला अगर इतना बेशरम है कि उसको लग रहा है कि ये सीन क्रिएट नहीं कर रहे, बेशर्मों की तरह कर रहा है, तो आपको उससे ज्यादा बेशरम होके you have to make sure you use a pitch that embarrasses the hell out of that guy, that he never tries that again with you. There have been times where educated, urban, well-read men have not respected my consent, you know, and I was okay with it because at least they're okay with me being with them in public. अरे भाई इसने तो family से introduce करा दी मेरे को, ये तो बहुत है. हाँ, ये बहुत बड़ी बात है. तो मैं lack of consent को छोड़ देती हूँ. It's a smaller issue. यार red flags क्या है तेरे हिसाब से in a relationship? सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो ये है कि आप फेमिनिस्ट नहीं हो, मतलब आप इक्वालिटी में बिलीव नहीं करते, या आप औरतों की इज्जत नहीं करते, या उनकी स्ट्रगल्स. मैं ये नहीं बोल रही कि आप हमेशा उनका साथ, मतलब साथ तो देना चाहिए, पर थोड़ी समझ होनी चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए. दूसरी चीज लैक ऑफ रिस्पेक्ट. आई फील लाइक वो अगर आपकी नहीं है, चाहे वो उनके जेंडर के लिए हो, उनके काम के लिए हो, वो किस चीज को पसंद करते हैं, किसको नहीं, उसके लिए भी. So I would say that the biggest red flag that I can think of in any relationship, regardless of gender, is disrespect. Because disrespect doesn't look like someone calling you a chakka. That is obvious, right? But disrespect so often looks like you not being prioritized. So all of that translates to disrespect, right? It's not just about calling someone a bad name. It also translates to consent when it comes to intimacy, when it comes to pleasure, right? So equality is about all of these things together. So I think disrespect is such a big one. हर बात पे रोती क्यों रहती है? That's a major red flag. क्योंकि मुझे रोना आ रहा है. Ask me why. Help me out with that trigger. कि what is triggering me and let's sort out that. Rather than यार रोती रहती है, कभी तो हंस ले. और I also don't like लड़के तो रोते नहीं. सेक्स एंड प्लेजर के बारे में भी हम लोग काफी बात करते हैं, एंड हमारी वो भी कंडीशनिंग बहुत हार्ड हो रखी है ना. एटलीस्ट मेन इन आवर कंट्री नो अ लॉट अबाउट सेक्स थ्रू पॉर्न ओनली, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस तो ऑफ द रूफ है कुछ गलत. सो व्हाट इज योर ग्राफ बीन लाइक? डू यू ऑल बिटवीन फ्रेंड्स डिस्कस, टॉक अबाउट इट ओपनली? We all like sex, guys. We can talk about it. Yes. And the more we talk about it, the less we will, remove the taboo. Yeah, not only that, but find education through porn, which is not the right way. मतलब वो दोनों के side से नहीं है. You never see a woman hitting the pleasure. Learn to go down on a girl. Learn, these ethics were just not there. Coming in 2 seconds and not even thinking about whether you've come. And thankfully, I got exposed to other ways when I was abroad and I studied in London. There's a little shame around like masturbation and things like that. So it took a long time. It's only when I went abroad and I saw how people were and talked about sex that I felt like, oh yeah, okay, maybe I gotta invest in a toy. Exactly. And stuff like that, and know what your body is made of. What makes you get pleasure. I'll tell you a funny thing, which is that one of my favorite sex toy shops is a German brand. And the name of the brand is Lelo. They do have the most ergonomic, beautiful toys. Something that I realized when I started talking to a lot more cis women about pleasure is it's a very common experience to have this huge gap in pleasure. And the orgasm gap is very real. फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात करते हैं क्योंकि वो भी फेमिनिज्म का हिस्सा है हमारे लिए. तुम्हारी फाइनेंशियल लिटरेसी का क्या पाथ रहा है? 0/0? 0/0. ज्ञान मेरा 0 है क्योंकि मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मेरी माँ को किसी ने नहीं सिखाया. सारा पैसा पापा ही हैंडल कर रहे हैं, वही कर रहे हैं. मेरी माँ को मतलब वो बेचारी मंदिर का दान पात्र में थोड़ा बहुत पैसा अपना जमा कर रही है, रख रही है. या जो छुपा के रखी होती थी महीना, छुपा के रख रही है, चोरी कर रही है, पापा के वॉलेट से निकाले, जो कि आई मीन इट्स एन ओपन सीक्रेट बट स्टिल, राइट? तो
जब तुम पहले से ही ऐसे ट्रीट कर रहे हो कि वो सिर्फ घर में रहेंगी, यही करेंगी, पैसे से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो वो जनरेशन से चला आ रहा है कि वो लिटरेसी जीरो ही है. इट इज वन ऑफ माई पेन पॉइंट्स कि मैं ऐसे क्यों घबरा जाती हूँ पैसे का नाम लेते, क्यों मेरे समझ में नहीं आता है. अगर समझ में नहीं आता तो समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा. So honestly मुझे कुछ नहीं पता था about banking numbers and investments. Okay जी. नहीं पता था. But my father was gracious enough to help me out and make proper investments for me when I was busy working and shooting every single day of my life during Jassi and all my TV stint. 5 years पहले my dad called me over and he said, बेटा बस हो गया. बस हो गया. Now let me live peacefully. I want to do my own thing. You take charge and you better understand. And now you directly deal with your CA, with the bankers and take charge. And if you're feeling lost, you know I'm here to guide you. My father has taught me a lot about finances. So we moved to this new house in Gurgaon a week back. And काम तो मैं कर रही थी, तो पर आप अपनी आँखों से देखते हैं ना कुछ होते हुए, अपने मटीरियलाइज होते हुए, तो वो अलग फीलिंग होती है. एंड इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी. आई नीड टू लर्न मोर and we can all learn from each other, and I do that. I ask my friends ki what are shares, kaise invest karte hain, tum kya karte ho, kya करते. I like these sort of conversations. How can men be better allies? Like this. Oh, thank you so much. A lot of men are hearing, they're not listening to them, not to put your point across, but actually listening ki kya problem hai. Listening better and just respect. Thank you so much for watching. Comments में बताओ हमको कि कौन सा आपका favorite moment था. Subscribe करो, hot like को, bell icon वगैरह दबाओ. Bye.